All right, now inshallah we can start. Okay, so please let me know. Is the screen visible to you? Yes, ma'am. It is visible. All right, Jazakallah khair. Now inshallah we can start our session. But before that, again इंशाल्लाह हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्पोकन इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि साथ साथ अगर हमें रिमाइंडर्स नहीं मिलते ना तो हम फिर से स्लो डाउन हो जाते हैं अपनी वर्किंग के साथ। हम उस तरह से मोटिवेटेड शो नहीं हो रहे होते जिस तरह हमें होना चाहिए। तो इंशाल्लाह कुछ अगेन इंट्रोडक्शन ज़रूरी है कि हम यहाँ पर क्यों हैं, हम क्यों सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश। आप सबके लाइक टारगेट्स क्या हैं, आप अपनी फ्लुएंसी को कैसे बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को कैसे दूर करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि जब हमसे कोई भी क्वेश्चन करे इंग्लिश में हम उसका इजीली जवाब दे पाए, या अगर हम किसी को या किसी से कोई बात कर रहे हों इंग्लिश में तो हम फ्लुएंट होकर करें, हम कहीं पे अटके ना, हम कहीं स्टक ना हो, हमारे पास वर्ड्स की कमी ना आ जाए, हमें वोकैबुलरी का पता हो, ग्रामर मिस्टेक्स ना हो। तो इंशाल्लाह उस सब चीज़ों को कवर करने के लिए हम आज यहाँ पर मौजूद हैं इंशाल्लाह। तो हमने इसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाना है इंशाल्लाह। So first of all, we need some kind of exposure to get used to this language. Otherwise, अगर हमारा exposure नहीं है इस language के साथ, we can never make up this up to a point, because हमने इसे अपने best level पर लेके जाना है। बिकॉज हम स्कूलिंग से ही ये पढ़ते आ रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ नो हाउ है इंग्लिश की, लेकिन हमारा आज यहाँ पर होना, इस कोर्स को ज्वाइन करने का मकसद ये है कि हम इसे बेस्ट लेवल पर लेके जाएं, राइट? I'm not saying that we have to be perfect in English because nobody can be perfect, right? But we can achieve a level जिस पर हम satisfied हों कि all right, अब मेरा जो level है अल्हम्दुलिल्लाह, now I am confident to speak in front of anybody, right? लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें space रखनी चाहिए मज़ीद improvement की। अगर हमने अपने आप को ये मान लिया okay, we are fully confident and we know everything, और अब हमें मज़ीद जानने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, so that's not the case and it will not work. तो इंशाल्लाह we need some kind of exposure। तो हमें अपनी vocabulary को enhance करते रहना है, हमें अपनी reading को continue रखना है, हमें साथ साथ vocabulary के lessons जो जो हमें task मिलेंगे ना, हमें उन्हें use करना है। जैसे कल हमने phrases देखे कि हम greetings कैसे करें, तो हमने अब ये नहीं कि पढ़ लिया सुन लिया बस ठीक है, नहीं। अब नेक्स्ट टाइम अगर हमसे कोई क्वेश्चन करे, हाउ इज इट गोइंग, हाउ हैव यू बीन अप टू, हाउ आर यू डूइंग नाउअडेज, हाउ आर यू, तो हमने उसके अल्टरनेटिव जवाब देने हैं, सिर्फ ये कहने के बजाय आई एम फाइन, राइट? इंशाल्लाह। And also we have to make some kind of environment। जब तक हम environment नहीं create करते, हम उस चीज़ को implement नहीं कर पाते, right? We can make our environment of speaking English through phone, videos, book reading, etc. हम कोशिश करें हम अपनी जो conversation होती हैं, चाहे हम टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू कर रहे हो, वो हम कोशिश करें इंग्लिश में हो, या चले कंप्लीट इंग्लिश में ना हो, हम कुछ फ्रेजेस उसमें ज़रूर ऐड करें, हम उसमें कुछ इडियम्स ज़रूर ऐड करें, जो हमने वोकैबुलरी के वर्ड सीखे हैं या सीखेंगे या सीख रहे हैं, तो हम उन्हें ज़रूर ऐड करें, ताकि हमारे माइंड में हर वक्त होनी चाहिए कि येस वी आर लर्निंग इंग्लिश एंड वी आर ऑल्सो स्पीकिंग इट, वी आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग इट, राइट? इंशाल्लाह। और इसी के साथ साथ हमें कहीं से भी कोई भी अगर वीडियो मिलती है ना, हमें कोशिश करनी है हम उससे कुछ गेन करें, उसे इम्प्लीमेंट करें, ये ना कि बस ठीक है हम तो बस कर रहे हैं कोर्स तो हमें क्या ज़रूरत है, नहीं। इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर कहीं भी आपको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई न्यू बात सीखने को मिलती है इंग्लिश में, यू कैन ऑल्सो सी दैट एंड लर्न दैट, और उसके बाद आप वही चीज़ें हम सब से भी शेयर कर सकते हैं थ्रू द ग्रुप। बिकॉज क्या होता है जब हम चीज़ें सीखते हैं ना और जब हम दूसरों को सिखाते हैं, इट जस्ट हेल्प अस अ लॉट। तो वो चीज़ हमारी एक्टिव माइंड में, एक्टिव मेमोरी में चली जाती है, और फिर नेक्स्ट टाइम हम जब उसे यूज़ करते हैं तो वो हमारे
टॉप ऑफ द टंग में होती है। अदरवाइज हम बस सोचते ही रह जाते हैं, अच्छा हमने ये वर्ड सीखा था बट हम इसे बोलें कैसे, राइट? सो इंशाल्लाह। एंड द अदर थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंटली, वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। अब हम सोच रहे होंगे कि हम कैसे सोचें इंग्लिश में, हमारे माइंड में तो हमेशा उर्दू होती है। हम जब भी बोल रहे होते हैं हम उर्दू में बोलते हैं, सोचते हैं तो उर्दू में सोचते हैं। अगर हमें किसी को इंग्लिश में जवाब देना हो ना, तब भी हम उर्दू में सोचते हैं और फिर कहते हैं अच्छा अब इसकी इंग्लिश क्या थी। हमें ऐसा नहीं करना। जब हम उर्दू में सोच के इंग्लिश को बोलते हैं ना, इट्स जस्ट गेट वेरी हार्ड टू डिलीवर आवर मैसेज टू अदर वन। बिकॉज देखें, पहले आप सोचेंगे फिर उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे, तो बहुत टाइम भी लगता है और उसके अलावा हम सही सही कन्वर्जन कर भी नहीं पाते। बिकॉज हम कॉन्टेक्स्ट में हमेशा बोलते हैं इंग्लिश को। ऐसे नहीं होता, अगर हमने उर्दू में कोई बात सीखी है तो हम उसे, यानी कि हम सोच रहे हैं तो हम उसे एग्जैक्टली वैसे इंग्लिश में बोलेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं, तो हम फिर सोचेंगे आप, यानी कि मैं कहूँ यू कहाँ जा रहे हैं, वेयर जा रहे हैं, क्या था इसका इसकी इंग्लिश, गोइंग, समथिंग लाइक दैट। नो, सो वी डोंट हैव टू डू समथिंग लाइक दैट। वी हैव टू spontaneously give answer. Where are you going? What are you doing? How do you do? तो जब ये वर्ड्स, ये फ्रेजेस, ये इडियम्स हमारे माइंड में होंगे ना, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? और देयर इज अनदर टिप एज वेल दैट हाउ वी कैन थिंक इन इंग्लिश। तो उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन ये है दैट वी कैन ट्राई आवर बेस्ट टू नरेट एवरीथिंग इन आवर हेड। मैं आपको शायद पहले डेमो में भी ये बात कही थी कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना, अगर हम उसे इंग्लिश में नरेट करने लग जाए अपने माइंड में ही, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल टिप है। बिकॉज फिर हमें पता चलता है अच्छा मेरी कहाँ कहाँ लैकनेस है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, I am taking a lecture, I am delivering a speech, I am washing the clothes, I am doing this, I am doing that, I am going to somewhere, I am walking. The weather is so nice, it's very pleasant. Nowadays, the weather is so pretty good, or it's cold. या फिर हम कह सकते हैं कि today I'm feeling very exhausted due to a lot of work, something like that. जो जो हमारी कंडीशन है ना, हम अगर इसे सिर्फ अपने माइंड में ही नरेट करते रहेंगे ना, तो हमारी स्पीकिंग हैबिट डेवलप होगी। बिकॉज हमें इंग्लिश में सोचने की और बोलने की हैबिट डेवलप करनी है। अदरवाइज हमें आता भी होगा ना, हम किसी के सामने बस चुप करके उर्दू में ही जवाब दे पाएंगे, अगर हम इंग्लिश में देना चाह भी रहे होंगे तो। So yes, it's a very good habit. We have to narrate everything, whatever we are doing, in our head, inshallah. Then we can also try to talk with ourselves in our mind, or also we can speak out loud. या तो हम ऊंची आवाज में बोल के ये कर लें, या तो हम अपने सिर्फ माइंड में ही सोचें, लेकिन हमें करना जरूर है। डेली बेसिस पर आप ये जरूर एक एक्टिविटी बनाएं कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी पॉइंट पर हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उन चीज़ों को नरेट करने लग जाएं इंग्लिश में, उससे सोचने लग जाएं। फिर आपको ये भी आइडिया होगा अच्छा मुझे इन वर्ड्स की वोकैबुलरी नहीं पता, आप जाएंगे उसे सीखेंगे, उसे सर्च करेंगे। आप कहेंगे अच्छा ये वर्ड की वोकैबुलरी तो मुझे आती है लेकिन इसे प्रोनाउंस कैसे करना है, तो आप उस वे में उसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेक करेंगे, राइट? इंशाल्लाह। सो यस, आफ्टरवर्ड्स एक और टिप जो मैं देना चाहूंगी, सो वी कैन स्टार्ट जर्नलिंग एज वेल। इट्स सुपर अमेजिंग टू डू जर्नलिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। इवन अगर आपने अपनी टू डू लिस्ट ही बनानी है, उसे इंग्लिश में बनाने की कोशिश करें। आपने अगर कल का डे प्लान करना है कि मैं कल ये करूंगी, उससे आप पहले जर्नलिंग करके लिखें, हर चीज़ राइट डाउन करें, फिर आप उसे देखें, इससे बहुत फर्क पड़ता है। द रीज़न इज बिकॉज इस वे से हम अपनी थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं इंग्लिश में। बिकॉज जब हम लिख रहे होते हैं तब हम कुछ सोचते हैं तो लिखते हैं, राइट? जैसे अब मैं सोच रही हूँ कि कल मेरा ये काम है, मैंने ये क्लास लेनी है, मैंने यहाँ यहाँ जाना है, इससे मिलना है, उससे ये बात करनी है, ये इम्पोर्टेंट टास्क है। तो हम सोच रहे होते हैं और लिख रहे होते हैं। तो जब हमें पता होगा कि हमने इंग्लिश में लिखना है, तो ऑब्वियसली हम सोचेंगे भी इंग्लिश में, हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी इंग्लिश में ही बना रहे होंगे, बिकॉज हमें पता होगा हमने लिखना इंग्लिश में है, राइट? तो बेशक 5 मिनट आप लिखें, 10 मिनट लिखें, लेकिन लिखें ज़रूर इंशाल्लाह। सोने से पहले एक छोटी सी कॉपी ले लें, कोई डायरी ले लें, और इसमें ये अपनी हैबिट बनाएं
कि कुछ सेंटेंसेस आप प्रेजेंट के लिखें। चलिए, जो मैंने आपको ये बताया ना कि आप एक्टिविटी ज़रूर किया करें, आप किसी भी मोमेंट में हैं तो उस टाइम आप क्या फील कर रहे हैं, मौसम कैसा है, आप क्या नहीं फील कर रहे हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट क्या है। तो जब आप 5 मिनट उसे लिखेंगे ना उसी सिचुएशन में ही, सोने से पहले, तो वो आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा, राइट, बिकॉज आप उसमें प्रेजेंट टेंस को यूज कर रहे होंगे। फिर आप लिखें 5 मिनट कि कल मेरे साथ क्या क्या हुआ, राइट। तो वो आपका पास्ट टेंस कवर करेगा। इसी तरह जब आप लिखेंगे कि कल मैंने करना क्या क्या है या अपना डे प्लान करेंगे, तो वो हमारे पास फ्यूचर टेंस को कवर करेगा इंशाल्लाह। So yes, you can start your journaling now। और हम फिर एक्टिविटी भी रख सकते हैं। समटाइम्स हमें ये लगता है कि अच्छा हम करेंगे, लेकिन हम फिर भूल जाते हैं, फिर हम कहते हैं we will start from tomorrow। But no, we have to start from today। हम जब भी सोचते हैं कि हम कल से स्टार्ट करेंगे, हम नहीं कर पाते, right? So we have to take an action, we just have to do it। तो हम क्या करेंगे आज इंशाल्लाह, जब भी हम जिस टाइम पर भी आप लोग सोने जाते हैं, whatever the time you go to your bed to sleep, before that you can take 10 to 15 minutes and start writing down everything इन इंग्लिश। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम लिखेंगे ना तो उसकी हल्की सी पिक्चर सेंड करके भेज सकते हैं ग्रुप में कि मैंने ये टास्क आज का डन कर लिया है। या फिर हम उस डायरी की और पेन की पिक्चर भेज सकते हैं कि हम लिख रहे हैं। इससे क्या होगा, हम कॉन्शियस रहेंगे कि हमने ये काम करना है, हमें ये टास्क भी सबमिट करवाना है और ग्रुप में भी सेंड करना है। और जब फिर एक या दो सेंड करेंगे तो थर्ड पर्सन को भी मोटिवेशन होगी। तो आज ये आपने ज़रूर करना है, जब भी आप सोने जाएं उससे पहले ये आपने 10 to 15 मिनट्स की एक्टिविटी ज़रूर करनी है। और फिर इंशाल्लाह हम इसे डेली बेसिस पर ही कंटिन्यू करेंगे। मैं भी आपको सेंड करूँगी ग्रुप में, आप सब ने भी सेंड करनी है इंशाल्लाह। Okay, so these were all the basic tips that we can follow up inshallah। Okay, afterwards हमारे पास और राइट रबिया भी मौजूद हैं। सो रबिया, यस्टरडे हमने थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन भी की थी इंग्लिश में, थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेवल पर एक दूसरे के व्यूज़ देखे थे, एक दूसरे से हैबिट्स पूछी थी, और वेदर के बारे में पूछा था, फेवरेट थिंग्स के बारे में पूछा था। तो आज आप यहाँ मौजूद हैं इंशाल्लाह। सो इंशाल्लाह your fellow guys will also love to hear from you everything inshallah। So are you ready so that we can communicate a I bit? yes, I'm ready. Actually, I've got your points that you have told today. These were all also I think so. You have told these in the demo also. So I get these all tips that you are telling. So what we are going to do in the next, I think you should have to give us some the tasks daily basis Yes, yes, according to tenses or I was telling example. that before in the starting of this lecture कि जो डेली बेसिस के Okay. टास्क है ना, वो इस वीक नहीं Okay. No. होंगे। इस वीक हमारे पास सिर्फ मंडे टू थर्सडे हमारे लाइव सेशन होंगे, देन फ्राइडे इज ऑफ, Okay. और सैटरडे और संडे को आपको असाइनमेंट्स और टास्क सबमिट की जाएंगी फॉर दिस वीक। बिकॉज नेक्स्ट वीक से हमारे Okay. पास रमज़ान है, राइट, इंशाल्लाह। तो Yes. उस Yes. रमज़ान से Exactly. हमने अपनी थोड़ी सी रूटीन को चेंज करना है। तब आपके डेली बेसिस पर Yes. आपका वर्क स्टार्ट होगा, बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट Okay. वीक। तो Okay. Get इसमें it. सिर्फ इंशाल्लाह लाइव सेशंस होंगे, ओके। Okay. I got. Yes. Got it. All right, Jazakallah khair. Now, inshallah, we can start. So, Rabia, please tell your name, full name again with your spellings. My name is Rabia Ijaz, Rabia. Basically, I'm a teacher in a Lahore grammar school that is actually an international school where we are speaking already English because we're Okay, communicating that's our great. students in English. So I want to improve my Alhamdulillah. English a little bit, and I also want to improve my English on the next level maybe. So Yes, that's why I joined this inshallah. session. All And I right, also that's want to improve great. my accent somehow much better from before. So that's why I joined this one. And I hope inshallah, I'll get it everything which you told me.
You will tell Yes, me everything, so inshallah, I will get it. inshallah. And it's a very important thing because if you are a teacher, especially in a grammar school where you have to speak English completely and Yes. thoroughly, it's a great thing to practice, alhamdulillah. The words, the vocabulary, Yes. the phrases we are going to learn here in this course, Yes, mostly you it's can happen also that we know the implement that. things. Mostly it is mixed when I knows everything, have words and the vocabularies that is clear in my mind. And when I got started with someone continually, mostly it happened that I forgot to paste the exact sentence, or that is much time that is mixed. But Okay, after okay. that, I just All think right. that, oh, I speak this, but this is was not suitable. Yeah, So because that's why I think there's a some, yes, there's a some flaws in my English maybe, or maybe some not I'm sure full confident in this. okay, I agree to your Maybe point it needs a because lot of practice anymore. Yes. yeah, practice also needs to be implemented on daily basis. But again, we have everything in our mind thoroughly. We know the words, we know the sentences, phrases, everything. But we are not again habitual of that. That's why sometimes we just confuse, and sometimes we just think that okay, this is not something which I basically which I have to use at that moment or at that place, right? Because everything is in our subconscious mind. Everything is not present in our active memory. The things we have learned until so far, these all are present in somewhere at any deep portion of our mind, and these are not in our active vocabulary and active memory. So we have to like put together everything into our mind, into our active memory, not in the passive memory. When we do that, inshallah, it will be so helpful for us कि जो भी हम बोलना चाह रहे हैं हम उसी टाइम पर एग्जैक्ट फ्रेज यूज करें जो हमें करना चाहिए इंशाल्लाह. So the thing is, inshallah, everything we are going to learn or practice here, inshallah, you will see the progress that whatever we are doing here, you are going to implement everything in your daily life. And alhamdulillah, you have a great chance to speak up everything which we are going to learn here because you got the time, you got the environment in your school with your students, with your colleagues. So, so yeah, you can practice a lot by this way. And yes, okay, so Rabia, that's great. All right, now tell me a bit about your city. What's the climate there? For I think it's about the maybe you know or don't know. Because so far it's a Punjab city, and the climate is a bit better than before. Now it's a sunny day. Okay, all right. So And do you love winters or summers? before I like the winters most because that was no duties on me. That's why I was enjoying the winter. But Okay, now that's it's awesome. Alhamdulillah. during winter we have to do the duties and the home duties and the office duties. In that case, I think it's a center weather is a better than winter or Yeah, summer. you are right. You're so true. Alhamdulillah. That's great. Okay, now tell me what are the things you do in your spare time? Like, do you got some kind of I love hobbies? I love to do the calligraphy. Calligraphy is my hobby, and Arabic calligraphy, Oh, and mashallah, also that's doing the awesome. paintings. Yes, Okay. paintings. I also love to do the paintings. So whenever I got free, so I started to do drawings and paintings and calligraphy. These are my habits and also my hobbies. That's interesting, Alhamdulillah. All right, and you know, you have a fellow along with you, Aksa, who also loves calligraphy, Alhamdulillah. So you can match up Oh, so many things together about yes, calligraphy. that's That's so sweet. great. All right, now, okay, Rabia, tell me what are the things you love during night? What are the things you try to do when you are present at a moment, when Okay, everything is cloudy and actually also at the weather night. is fine? Okay, at night, the one thing that is I like the most, that is the moon All of right, yeah, mostly the full we moon, love night moon. that I so like that. much. Yes, I also try to make the exact painting of that night. Oh, So okay, I tried a lot to Alhamdulillah. make of that moon. So that's why I always notice that full moon. Oh, subhanallah. So
So it's so amazing to Yes. see that like it's 100% true. When you see that, Alhamdulillah and Subhanallah, an amazing feeling got through your mind, and something hits so differently, right? So it's so captivating to see the Yes. moon every night, and also the stars. Yes. Sometimes I love the stars as well when there's just Yes. nothing. But from the three to fourth date of the moon, I started to see the moon, and I follow the moon till the completely, and Alhamdulillah, that's it get fantastic. completed. So yes. Okay. So I eagerly wait for the new moon again and again. The moon converted the full moon. So I love that. Alhamdulillah. So the That's why journey at goes night I on, just right? That's good. Alhamdulillah. yes. All right. Thank you so very much for sharing. Keep up the good work. Alhamdulillah. And yes, by the way, have you got some kind of books? Do you read in English? Uh, got from where? Like At home? normally, do Do I you have? have, But yes. are you asking about the? Yes, no, I don't have. I have, but other syllabus book, not else. But I can take from my library of the school. Okay, all right. But I prefer choosing one book that is not a syllabus book. So Uh, through that, you can learn a lot actually. For example, any okay, book, okay. I'll any bring you novel. about Shakespeare, any Shakespeare's book. Yeah, yeah, exactly. Any book Okay, which can be a motivating one or personality okay, development book or something like that, or a okay, storybook even. okay. I'll bring you. Yes, inshallah. Okay, I'll Because bring through that. that, when we read the book, Alhamdulillah, it's just so amazing to Okay, imagine everything in our mind. And the everything we read, we learn, it just goes yes. straight into our mind. So we can learn Okay. new vocabulary, we can learn sentence structure and everything. So Alhamdulillah, it's a great tip. All right, so Jazakillah I khair. think one thing I Yeah, yeah, sure, go ahead. Yes, were you saying something? are you listening? Yes, yes, Alhamdulillah. You can start speaking now. Okay, I'm saying that I'm. It's just my suggestion. That kindly give us almost 7 to 8 words on the daily basis of vocabulary, or maybe phrases with the Urdu translation, and we will prepare that, and we will send the recordings of that phrases word which we will prepare, and you will follow, help us and guide us about exact pronunciation of that words and accents of that words, and it will also helpful for us for understanding the new phrases meanings and the daily basis Yes, yes, conversation. yes. Rabia, basically, you're so right. Actually, it's also already part of our course that we are going to learn the Okay, it's great. phrases, the vocabulary, and everything. But everything is going to start from the next week, inshallah. This week, we just have Okay, our live sessions and we have some okay, activities on Saturday and Sundays, inshallah. So, yes, you are going to have that, everything. So, no worries. okay. All right. Okay. So, Jazakallah khairan Kathira for sharing. Alhamdulillah, it's such nice talking to you. Now, inshallah, we will proceed to our next part of this session. But before that, let me see the timings. Otherwise, our meeting can get over. All right. So, yeah, I think we can just wind up this session and let me share the link again, inshallah, so you can join again. Then we will proceed with our next phase of this session, inshallah. So, are you all comfortable with it? Yes, we are. Okay, Yes, ma'am. sure. All right, so let me just stop it.